Let's take you to one of Bihar's most revered spiritual landmarks, Bitho Sharif Dargah, the sacred resting place of Hazrat Makhdoom Syed Shah Durwesh Ashraf. Nestled near Gaya, this shrine has stood as a timeless beacon of faith, peace and communal harmony, drawing seekers from all walks of life for centuries. Take a look. In the heart of Bihar, in the history of Gaya, stands a shrine that has transcended time, faith and boundaries, wherein the shrine of Hazrat Makhdoom Syed Shah Durwesh Ashraf, honoured as an absolute symbol of peace and harmony. People, irrespective of their religious backgrounds, Hindus, Muslims, Sikhs and Christians, all together pay their sincere tribute to this Sufi saint. Like every year, this year, the revered Dargah also drew thousands of devotees who came to seek his blessings, commemorating his 544th Urs of Baba. ये दरगाह खानका हज़रत मखदूम सैयद शाह दुर्वेश अशरफ रहमतुल्लाह अलैह जो कि एक महान सूफ़ी संत गुजरे हैं 840 हिजरी में यानी कि 1436 ईस्वी में इस मगध की धरती पे आए, बीथो शरीफ को अपना ठिकाना बनाया, यहाँ अपनी कुटिया बनाई। वो आए और आकर यहाँ मानवता का पाठ पढ़ाया, इंसानियत की बात बताई। किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, गरीब हों, अमीर हों, सबों को बराबर का दर्जा दिया जाता है। The 5-day-long Urs festival witnessed an atmosphere of tranquility and brotherhood as the devout, cutting across different religious backgrounds, shared love and harmony alongside the offerings. It is believed that whoever comes to the Dargah never returns empty-handed, as Baba bestows his blessings equally on everyone without discrimination. ये आलिया दरबार है सरकार मखदूम अशरफ बाबा का 544वां आज उस मुबारक का दिन है, सोमवार का दिन है। आज रात को लगभग 10 बजे के आसपास चादर पोशी होगी सरकार मखदूम अशरफ रहमतुल्लाह बाबा के आलिया दरबार में। हजरत मेरे सरकार पीर साहब अबरार अशरफ के हाथों के चादर शरीफ होगा सबके साथ। और यहाँ पे तमाम जितने भी लोग आए हैं दूर दराज से, हर समुदाय के लोग यहाँ एकत्रित हैं। काफ़ी लोग सब परेशान हाल आए हैं, हर तरीके के परेशानी से आए जूझे हुए, सबकी परेशानी दूर होती है। In a world striving for unity, these shrines remind us that we are the one, bound by faith, bound by humanity. More than the places of worship, they are beacons of hope, love and togetherness.